Tonight, our top focus remains the farmers' protests that have had various dimensions, including in the court and in the streets. Now, as the farmers continue their agitation outside the borders of the national capital, the alleged suicide of a 65-year-old Sikh priest has created a stir. He died near the protest site on Wednesday and in an alleged suicide note wrote he shot himself in solidarity with protesting farmers. Apart from Singh now, at least 20 farmers have reportedly died since the agitation began in November. As the winter temperatures rise, the agitationists are increasingly finding themselves under serious health ailments. It's our top story. The death of a Sikh priest has cast gloom on the protests against new farm laws. The 65-year-old Baba Ram Singh, who recently distributed blankets and donated 5 lakh rupees, allegedly died by suicide on Wednesday. In an alleged suicide letter, the priest wrote he was pained by the plight of protesting farmers. पेशेंट हमारे पास आया था बाबा राम सिंह नाम था उनका, ब्रॉड डेड पेशेंट था। सर में वेपन से उन्होंने गोली मारी थी अपने आप को। रीज़न क्या था वो तो पुलिस की कार्रवाई के बाद पता चलेगा। Singh's mortal remains are kept at the Nanaksar Gurdwara in Singhra village so that his followers can pay their last respects. पौना घंटा रात मेरे पास वो बैठे रहे हैं टेंट में और पूछते रहे हैं कैसे होगा, कैसे सरकार मानेगी, क्या सरकार का अभी तक चल रहा है। बहुत सेवा कई दिनों से कर रहे थे, हमने नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। संत राम सिंह जी सिंगड़े वाले, जो कि एक बहुत बड़े महापुरुष हैं जिन्होंने अपना जीवन काल मानवता की सेवा में लगाया, कि बहुत दुखी की घटना है। हम सबके लिए बहुत दुखी हृदय है हमारा, लेकिन हम सबको संयम भी रखना है। ये मेरी आपसे हाथ जोड़कर आग्रह है। The farmer strike that has entered the 4th week is taking a toll. At least 20 protesters have died since the agitation began in November end. This is the family of Bhim Singh, a farmer from Sangrur who died while protesting at Singhu border. ਇਸ ਲਈ ਐਂ ਕਹਿਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਠੇਸ ਪਵੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 6 ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਜੇ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਉਣ ਸਾਡਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਰੋਟੀ ਖਾਤਰ ਆ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਆ ਖੂਹ ਟੋਪੇ ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨੇ, ਅੱਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਢੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। Another 62-year-old farmer, Pala Singh, who hails from Patiala, died of heart attack at the Singhu border. The body has been handed over to the kin after the post-mortem. उम्र करीब 55 वर्ष है, तो इनकी हृदय गति रुकने से मौत हो गई थी। आज पोस्टमार्टम करा के परिजनों के हवाले कर दी बॉडी। ये आंदोलन में आया था 13 तारीख को। हार्ट अटैक हुआ है। हाँ, हृदय गति रुकने से, बाकी विसरा रिपोर्ट जैसे भी आएगी। At the Tikri border, protesting farmers gathered to pay homage to at least 2 farmers who lost their lives. एक किसान हमारा जय सिंह सी, मुंडा 45 साल ਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਰਾਤ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੁੰਗਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ, ਸਤੌਰ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਟਰਾਲੀ ਤੋਂ ਡਾਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ। Delhi is in the grip of winter chill with icy winds bringing down temperatures. But protesting farmers camping at Singhu border are standing their ground. They have refused to move unless the 3 farm laws are repealed. Bureau Report, India Today.